Hello friends, Sutra Academy Science in. Today's topic is Phobias Special Part 1. First of all, I would like to give an example of a phobia, and that is acrophobia. Let's understand this. Acro means height and phobia means fear. I want you to concentrate on this. Fear means phobia and acro means height. So it becomes acrophobia, meaning the fear of height. This can also work with one word substitution. If somebody asks or you are asked somewhere that the what is the fear of height, you can say acrophobia. Now moving to the definition of phobia, a phobia is a persistent, excessive, unrealistic fear of an object, person, animal, activity, or situation. In simple words, phobia is a fear, and that can be from object, person, animal, activity, situation, or anything else. It is a type of anxiety disorder. Anxiety परेशान कर देने वाला. A person with a phobia either tries to avoid the thing that triggers the fear or endures it with great anxiety and distress. मतलब सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ से हमें फोबिया हो यानी कि डर हो तो हम उसके आसपास जाने से घबराते हैं या नहीं जाते, और अगर हम जाते हैं तो बहुत डर डर के और परेशानी में जाते हैं, जिससे हमारे पसीने छूट जाते हैं और हम अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं. In this video, actually we are going to do only 5 phobias, out of which we already have done one, and that is acrophobia, fear of height. Now moving to the next 4. In this screen, a new screen, the first one is fear of water. Friends, fear of water is aquaphobia or hydrophobia. Let me help you to remember it. Read the word aqua. Aquatic animals. You have heard about it. Aquatic animals, it means water animals. So aqua is related to water. Next is hydrophobia. Hydro is also something related to water, so it is hydrophobia. You also know Aquafina, AquaGuard, the water purifiers, so that is also related to water. So fear of water is aquaphobia or hydrophobia. You can remember any one of it. Next one is fear of heat. You know a device, and that is thermometer. Doctor uses this instrument to measure the temperature of the body. So actually what is the temperature? That is heat. So thermo is something related to heat and phobia is related to fear, so it becomes thermophobia, the fear of heat. So this is becoming very simple for you all, and if you try to make it in a context or understand it by a scenario, so this will become easier to learn. Fear of animals, zoophobia. You know, we see animals in zoo. चिड़ियाघर में हमें हर तरह के जानवर दिखते हैं, तो जानवर, किसी भी जानवर से अगर हमें डर हो तो उसे हम कहते हैं zoophobia. So this is again very simple. Next is fear of height, already done. Next is fear of flying. हम हवाई जहाज में सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो तो हम लोग फ्लाई करते हैं किस में? एरोप्लेन में. सो एरो, टेक द वर्ड एरो फ्रॉम दैट, and phobia you know is for fear, so it becomes aerophobia. You can also call it aviophobia. Both the words are correct and you can use either. So we have completed the 5 phobias. Now after knowing the meaning of the phobias, we must know how to use them. So here is a new page in front of you, and that is some examples using phobias. The first one is the man who died yesterday was suffering from acrophobia. जो बंदा कल मर गया वो, उसको है ना एक्रोफोबिया था, उसको हाइट से डर था. एक्रोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ हाइट, तो ये उसको हाइट से डर था. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, शी नेवर गोज फॉर स्विमिंग. इज शी सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, या फिर आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? एक्वाफोबिया. बोथ आर करेक्ट. उसको जब भी, कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को कभी भी स्विमिंग के लिए ऑफर किया जाए, शी ऑलवेज डिनाइज. सो इज शी सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया और एक्वाफोबिया. ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल है, कंटेक्स्ट बना करके आप इसको प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट वन इज, हे डोंट गो नियर लॉयन इफ यू सफर फ्रॉम जूफोबिया. आई वॉन्ट यू टू
think about a scenario for this. एंड द सिनेरियो इज, कुछ स्टूडेंट्स मान लो चिड़ियाघर जाते हैं, उनको टीचर्स लेके जाते हैं और शेर के पिंजरे के पास पहुंचते हैं सभी, और वहां पर गार्ड होता है। गार्ड कहता है, हे डोंट गो नियर लायन, आप शेर के पास मत जाना। इफ यू सफर फ्रॉम जूफोबिया, अगर आपको किसी को जानवरों से डर है तो आप पीछे ही रहें। ठीक है, क्यों ये ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि शेर जो है वो बड़ा ही, आपको पता है, क्रूअल है, बहुत खतरनाक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फायर्स एनिमल। ठीक है, ये बहुत ही गुस्से वाला है, तो अगर कोई डर है किसी को तो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसीलिए से दूर रहें आप। सो नेक्स्ट पेज shows homework for you. So I am not giving any exercise today, but you have a homework, and that is, please write these phobias in your diary. So before this you have to make a diary. Next, and also try framing different types of sentences on these words. And I suggest you to please write 2 or 3 sentences on each phobias, and trust me, that will certainly help you to build your vocabulary. Your word power is going to be very good, and it will be enhanced if you make sentences as well. So this video is completed. Thank you everyone. Sutra Academy signs off.